नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं? हम लोग कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों। सभी को नमस्कार, मेरा सभी को प्रणाम। खास दिन है दोस्तों, बजट का दिन है आज, तारीख 1 फरवरी की। समय होने वाला है लगभग 11 बजे का दोस्तों। हम जुड़ चुके हैं अनअकैडमी के लेट्स यूपीएससी सीएसई चैनल पे दोस्तों, जहां हम बात करेंगे आपके साथ लाइव बजट की। जी हाँ दोस्तों, जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर श्री निर्मला सीतारमण जी संसद पहुंच जाएंगे और अपना स्पीच चालू करेंगी। उसके बाद उसके बाद हमें समय नहीं मिलेगा। नॉन स्टॉप अपना जो सेशन होता है 2 घंटे का, लगभग 1.5 घंटे का चलेगा ये। हम यहाँ पर शायद मैं कम बोलूँ आपको, मैं पैरेलल में नोट्स बनाता हुआ चलूँगा दोस्तों आपके लिए। आपकी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर नोट्स बनते हुए चलेंगे, आप देख पाएंगे मेरे साथ। और सबसे ज़रूरी बात, सुनिएगा आराम से, नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा, इसको आप जरूर नोट करें अपने साथ और सुने निर्मला जी क्या कह रही हैं। तो आप 2 काम कर रहे होंगे, एक मुझे देखने के अलावा एक निर्मला जी की स्पीच सुन रहे होंगे आप साथ में मेरे, और देख भी रहे होंगे वीडियो उनका, और दूसरा स्क्रीन के साइड में आप नोट्स बनते हुए देख रहे होंगे। ठीक है, दोनों काम करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। सभी को नमस्कार दोस्तों। फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दो यार। और कोई पूछे बीच में क्या चल रहा है क्लास के, तो मैं बताने में योग्य नहीं होऊंगा, तो आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या चल रहा है किसी को। ठीक है, कोई परेशान ना हो ज़्यादा। दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट, प्रयास करेंगे आपके साथ। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देना चाहूँगा फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे आपके साथ। तो ये जो आपका सेशन होगा दोस्तों, इस प्रकार की विंडो आपको दिखाई देगी यहाँ पर, जहाँ हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे एक तरफ, और एक तरफ निर्मला जी की स्पीच चलेगी आपके साथ में यहाँ पर। बाकी जुड़ जाइए दोस्तों मेरे संग। अगर हमने इकोनॉमिक सर्वे किया तो उम्मीद कर रहा हूँ वो आपको याद होगा। हमने कल देखा था इकोनॉमिक सर्वे का हाईलाइट्स, उस पर डिटेल चर्चा होगी आने वाले दिनों में दोस्तों। बाकी याद रखिएगा, आप जुड़ सकते हैं मेरे संग दोस्तों। जो बच्चे जुड़ना चाहें मेरे साथ लाइव सेशन में, ऑफलाइन सेशन में, वो जुड़ सकते हैं दोस्तों। कहाँ पर? अनअकैडमी स्टोर जो बना है मुखर्जी नगर किंग्सवे कैंप में। उसके लिए क्या करना होगा, एक आपको यहाँ पर आपको QR कोड दिख रहा है दोस्तों, उसको स्कैन कीजिए, या फिर नीचे डिटेल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म आ रहा होगा, उसको फिल कर दीजिए, जिससे आप संडे को 12 तारीख को 12 बजे मुझसे जुड़ पाएँ अनअकैडमी स्टोर में दोस्तों। जी हाँ, बाकी याद रखिएगा, आज है अपना वेडनेसडे का दिन 360 होगा दोस्तों। जो नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम आशीर्वाद दोस्तों। ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आपको बजट या सर्वे जुड़े समस्त PDF प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं मेरे संग आप लोग, मेरे ऐप पर या हमारे अनअकैडमी ऐप पर भी। याद रखिएगा दोस्तों, आरंभ बैच शुरू हो चुका है आपके लिए। डिस्काउंट ऑफर चल रहे थे, लेकिन अब डिस्काउंट ऑफर की जगह नए डिस्काउंट आएंगे दोस्तों आपके लिए। लेकिन कोड यूज करेंगे आशीर्वाद 360, जहां लगभग 1 साल का फीस अनअकैडमी का 50,000 GS के लिए, लगभग लेस देन 50,000 GS के लिए, और आपके लिए ऑप्शनल के लिए दोस्तों मिलाकर फीस लगभग 70,000 से कम होगा। कोड यूज कीजिए आशीर्वाद 360, जुड़िए सीधे मेरे साथ दोस्तों। पार्ट बनिए अपनी उस यात्रा का, अपनी उस जर्नी का, बनाइए पार्ट मुझे अपनी जर्नी का, जहां हम लोग सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, NCERT बैच लॉन्च हो रहा है, मिस मत कीजिए। 3999 में जरूर ले लीजिए दोस्तों। कोड यूज करना है आशीर्वाद 360 आपको। चलिए, बाकी ये ऑफलाइन बैच की जानकारी दोस्तों, निर्मला जी आने वाली है कुछ देर के अंदर संसद में। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं। फटाफट जुड़ चुके हैं हम लोग यहाँ पर सभी लोग दोस्तों, सभी लोग। चलिए, तो मैं आपको दिखा दूं प्रोफाइल कैसा रहेगा हमारा पढ़ने का। ये है दोस्तों जानकारी अपने बारे में, ये है कुछ जानकारी, तो इसको मैं मिनिमाइज करूंगा मेरा यहाँ पर आपके लिए, और ये रहेगा अपना प्रोफाइल दोस्तों। यहाँ पर आपकी स्पीच चलेगी, लगभग 50 सेकंड बाद वो लोकसभा में आएंगी और अपनी स्पीच देना चालू करेंगी बजट की वो। तो यहाँ पर हम लोग स्पीच सुनेंगे एक तरफ उनकी, आप एक विंडो में स्पीच सुनेंगे, 10 मिनट ऊपर जो विंडो है उसमें आपको दिखाई देंगी उनकी स्पीच चलती रहेगी, और साथ में हम लोग यहाँ पर अपने रनिंग नोट्स बनाते रहेंगे। जी हाँ, यहाँ बनाएंगे हम लोग अपने रनिंग नोट्स। तो अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा क्लास जा सकता है यदि आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ने बजट सुनने का और बजट को एनालिसिस करने का। मैं कीवर्ड्स को जो मेरे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए होंगे दोस्तों, उनको अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा, प्रयास करूंगा बजट का पूरा हो जाए। स्पीच में कुछ बातें छूट भी जाती हैं कई बार, परेशान मत होइएगा। स्पीच में अगर बात छूट भी जाए तो हम लोग बाद में उसका कोई एनालिसिस होगा या कोई सर्वे होगा तो वहाँ पर मैं आपको करा दूंगा। बजट लंबा होता है, कई बार 2 घंटे तक का हो सकता है, तो अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, पानी वानी लेके बैठिएगा। बीच में उठने का मौका नहीं मिलेगा, फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी तो फिर मुश्किल होगा, आप बीच में रेस्ट रूम में नहीं जा पाएंगे फिर। जी हाँ सर। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। हो सकता है, होप सो, इस बार आपको टैक्स देने की लोन नहीं लेना पड़ेगा, शायद ऐसा हो। मुझे लगता है कि मुझे टैक्स देने की लोन ना लेना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद कमी है। निर्मला जी का चाकू चलेगा हमारे ऊपर ही, मिडिल क्लास के ऊपर चलता है चाकू निर्मला जी का। आम आदमी के लिए राहत हो सकती है, उम्मीद करेंगे दोस्तों। मैं बताया था प्री बजट एनालिसिस में इस बार कि आम आदमी को राहत हो सकती है अगर निर्मला जी कुछ लेट हो रही है मेरी तरह। वो भी आ गई AST पे, आशीर्वाद स्टैंडर्ड टाइम पर 11 बज चुके हैं चूँकि, लेकिन हाँ लोकसभा टाइम पर स्टार्ट हो जाएगी। स्पीकर साहब आएंगे, ओम बिरला साहब आएंगे और फिर निर्मला जी को कहेंगे बजट पेश करने को। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों निर्मला जी पहुँचने वाली होंगी संसद के अंदर कुछ देर में। सभी को नमस्कार दोस्तों। एक काम करो, फटाफट लाइक और शेयर जल्दी से कर दो उसको ना,
जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, फिर मौका नहीं मिलेगा क्योंकि फिर हम लोग बनाएंगे नोट्स अपने यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट उम्मीद कर रहा हूँ ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है आपको। तो ये होगा आपका नोट्स मेकिंग वाला कॉलम, यहाँ नोट्स बनेंगे आपके पैरेलल में, उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा। और निर्मला जी की स्पीच के समय माइक मैं थोड़ा उनके पास रख दूंगा जिससे वो आप उनको सुन पाएँ, मुझे नहीं सुन पाए ज़्यादा। तो आपको 3 विंडो दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ नोट्स बनेंगे, यहाँ निर्मला जी दिखाई देंगे और यहाँ तो मैं हूँ ही आपके लिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। फटाफट 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 दोस्तों एक बार जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी शेयर करो इसको, और हम बनाएंगे लाइव नोट्स। जी हाँ, लाइव क्लास सुनेंगे आप, लाइव नोट्स मेकिंग करेंगे हम लोग बजट की, प्रयास करेंगे कुछ चीज़ ना छूटे। अब देखिए निर्मला जी लेट हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ आशीर्वाद स्टैंडर्ड टाइम, अब तो निर्मला स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा हमारा ये। तो निर्मला जी के नाम पर निर्मला स्टैंडर्ड टाइम का नाम रखेंगे हम लोग यहाँ पर। आज 11:02 हो गए, कोई बात नहीं, आप लोग वेट करते, मैं भी वेट कर रहा हूँ निर्मला जी का, और बड़े उत्साहित हूँ कि वो किस कोटेशन से स्टार्ट करेंगी और वो कौन सी तमिल पंक्ति को पढ़ेंगी या कौन सी वो किसी शायर को पढ़ना पसंद करेंगी। देखते हैं क्या होता है, वो सारी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग बजट होगा, कहाँ हंसी मजाक होता है बजट में खासकर। चलिए निर्मला जी आ गई हैं शायद, चलिए सर। Listen. A prosperous and inclusive India in which the fruits of the will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward as well. ऑडियो ठीक है दोस्तों, बता दीजिए मुझे। Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example Aadhaar, CoWIN and UPI, COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. People-centric agenda. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity.
Per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. बधाई हो, 1.97 In लाख these रुपए 9 प्रति व्यक्ति years, पर the कैपिटा Indian इनकम। economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. During last 8 years, 5th largest economy. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. Ease of doing business and We innovation. have made a significant progress in many sustainable development goals. SDG receive. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. UPI use बढ़ रहा है, The EPFO बढ़ efficient रहा है। implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. Technology plus knowledge driven The economy, economic important aspect. agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. जॉब की बात कर रहे हैं भैया। To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amrit Kaal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. कल सर्वे में इसका काफी We will डिटेल दिया enable गया है these groups इस योजना का। to reach the next stage Economic of empowerment of economic women. empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better इसके बारे में कल design, सर्वे में चैप्टर नंबर 12 बहुत अच्छा दिया गया जो बोल रही है विमला जी। बहुत शानदार चैप्टर आया है Through इसमें। supporting these policies, Chapter they 12 will survey be का। enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them
has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. New This scheme, will greatly PM benefit Vikas. the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. प्रायोरिटीज The ऑफ बजट, adopts the following 7 priorities. 7 प्राथमिकताएं नोट कर रही है. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kaal. सप्तऋषि ड्यूरिंग अमृत काल. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas पहला ही has प्राथमिकता. facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. कल के लेक्चर में बात की थी मैंने इस बारे में. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups. अगेन जो मैंने कहा था एनालिसिस में आपसे, In rural areas. Focus on The fund agri will aim startups. at bringing innovative and affordable solutions Agriculture for technology. challenges faced by farmers. एग्री टेक्नोलॉजी It की will बात. also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program
to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. Sri Anna. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter International Year of Sri Anna Millets in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, millets, all types Sri of Anna millets. Kutu, कुट्टू, काची, कांगा, रागी, बाजरा, ज्वार, Kodo, China and Sama. सारे नाम दे दिए हैं. सबके आगे श्री अन्न लगा देना, ठीक है. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Small farmers, health benefit, productivity, Now, production, to make India climate a change. global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. International Institute of Sri Anna Research, Hyderabad, renaming. Credit target Rename. will be increased to 20 lakh crores Underline. with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. Animal husbandry, We will dairies launch and a new fisheries. sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. Database for cooperative With this societies. backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. एनएफसी ने कहा था 2007 में इस बात को. एमएस स्वामीनाथन ने कहा था रूरल स्टेज पर स्टोरेज कैपेसिटी इंप्लीमेंट कर रही है सरकार. Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location
in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. ठीक है, हो चुका है ये तो। A mission to सब कुछ eliminate ठीक चल रहा है? sickle cell anemia by 2047 will be launched. ठीक है, ठीक है। It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. ICMR लैब में प्राइवेट लोग रिसर्च कर सकेंगे। A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower, Human for resource. futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. मेडिकल डिवाइस कोर्सेज, Teachers ह्यूमन training. फॉर ह्यूमन रिसोर्स। Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनेंगी और नेशनल बुक ट्रस्ट मटेरियल उपलब्ध कराएगा बुक्स के रूप में। NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. रीडिंग हैबिट को बढ़ाना, लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज है। Reaching the last mile. Prime Minister पहला Bharat प्राथमिकता Bhai's कंप्लीट, government सेकंड प्राथमिकता had formed the Ministry of Tribal Affairs रीचिंग द लास्ट and माइल। the Department of Development of Northeast Region नॉर्थ to ईस्ट के लिए provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. मंत्रालय बनाए हैं सरकार ने, पहले बन चुका ऑलरेडी है, कोई नया नहीं है। Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion,
skill development and basic लास्ट माइल कनेक्टिविटी का infrastructure. प्रयास कर रही है सरकार. एडिशनल Market speaker, ब्लॉक प्रोग्राम sir. बनाए हमने. Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. ये मिशन लॉन्च किया जाएगा. पीवीटीजी मिशन. ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है To पीवीटीजी पे improve क्वेश्चन. socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to. Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission. 15,000 करोड़ का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन. न्यू चीज for the scheduled tribes. मुख्यतः पीवीटीजी के लिए. Eklavya Model Residential फॉर Schools. एसटी के लिए गए. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project भद्रा to provide चुनावी घोषणा. sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. कर्नाटक में चुनाव है. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Thumbs up. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Manuscripts. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. गरीब विचाराधीन कैदियों को जमानत के लिए सहायता दी जाएगी. तीसरा प्रायोरिटी. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact तीसरी प्रायोरिटी. on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment Listen carefully. and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row कैपेक्स. by 33% to 10 lakh crores, which would be 10 लाख करोड़ कैपेक्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़. लास्ट टाइम 7.5 था. 33% का इजाफा किया है और ये हो गया अभी ये. which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. बहुत बढ़ा दी कैपेक्स. मैडम को पानी पीने दो. अभी तक पब्लिक का बजट था, अब शायद इंफ्रा की बात करेंगी वो. मिशन आए हैं, 1-2 स्कीम आई हैं. Substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at
13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Center plus state. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for one more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन 15 सालों तक एक्सटेंड कर दिया. Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. एक्सपर्ट पहले बनाया जाएगा. Capital outlay. I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker. Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. रेलवे का बजट शॉर्ट ऑफ. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration
which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. कानून खत्म किए हैं, प्रक्रिया को आसान किया है, जिससे लोग बेहतर जीवन जी सकें. We have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. कल के 4 पिलर थे ईज ऑफ लिविंग के, उसमें था ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, तो उसी को एक्सप्लेन कर रही हैं सिविल सेवा को, और हमने कानून कम किए हैं, तो वो कोई खास बात नहीं है. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. मैंने कहा था बायो एनालिसिस में एआई पे बहुत फोकस रहेगा सरकार का. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups and academia. A national data governance policy will be brought out. न्यू पॉलिसी बट विदाउट बिल कुछ नहीं होगा. डेटा गवर्नेंस के डेटा बिल चाहिए, अब तक पास नहीं हुआ है जो. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. कॉमन आईडी बनाया जाएगा. Common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. पैन को जैसे आधार कार्ड यूज करते हैं, पैन कार्ड यूज होगा कंपनी के लिए. पैन जो उनका होता है डिजिटल, will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बहुत फोकस है सरकार का. जो कल एक पिलर था 4 पिलर में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, तो फोकस कीजिए. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए आपके. बहुत काम का है टॉपिक. ब्यूरोक्रेसी अटैक करती है. relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs.
Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट और ई कोर्ट लॉन्च होंगे, बात चल रही लंबे समय से. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks and other business entities. 5G services. इस पर बात करूंगा मैं आपसे सीरियस नोट. labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems and healthcare applications. 5G एप्लीकेशन पर कॉलेज में लैब बनाई जाएंगी. Lab grown diamonds is a technology and innovation driven emerging sector with high employment potential. These environment friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds, लैब ग्रोन डायमंड to नई चीज. encourage indigenous production of LGD, lab grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. ग्रांट देंगे 5 सालों तक Reduce आईआईटी the को. cost of production. A proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. टैक्स I कम come to करेगी the सरकार fifth इस पर. priority, Honorable Speaker, sir, green growth. नेक्स्ट प्रायोरिटी ग्रीन Honorable ग्रोथ. Prime Minister has given a vision for Next priority. life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. लिसन काम का है. The recently launched National Green Hydrogen Mission with an outlay of 19,700 crores will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. ग्रीन हाइड्रोजन पर Our फोकस. target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन. This budget provides for 35,000
1,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. नेट जीरो के लिए To steer लगभग the पैसा दे रही है economy, सरकार। to steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. बैटरी स्टोरेज के लिए पीपीपी मोड। Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. Okay, For next. encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plans under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. लाइक E20 10 पढ़ते हैं हम लोग, एथेनॉल का ऐसे 5% CBG अनिवार्य। Bio input resource centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. प्राकृतिक कृषि पे जोर दिया गया है, 1 करोड़ फार्मर्स को अपनाया जाएगा। 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes. Mishti will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. मैंग्रोव इलाकों में के लिए मिस्टी योजना। Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest और Mann स्पेल Ki लोग Baat, मिस्टी टाइप का the स्पेल Prime होगा, देख लेंगे हम लोग बाद Minister में। said, Now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014 there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. Important aspect UPSC Government will question. promote their unique
conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generation for local communities. लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्शन करें और अपनी इनकम जनरेट Coastal करें. shipping. गुड वन. Coastal shipping will be promoted as an energy efficient and lower cost mode of transport. Coastal both shipping. for passengers and freight through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, I know, replacing, absolutely, thank you. Old Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. कल गडकरी साहब का स्टेटमेंट आया है, इस पर बताऊंगा आपको मैं क्लास के बाद. अभी Honorable Speaker, sir, I move to priority 6. प्रायोरिटी नेक्स्ट सिक्स प्रायोरिटी To empower our youth and help the Amrit PD भैया आपके लिए है ये, realize their dreams. आप लोगों के We लिए. have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. सुन लो आपके लिए. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones. सेम बात कही 2 साल पहले उन्होंने, सेम बात कही थी मैम ने 2 साल पहले. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. ट्रेनियों के लिए, ट्रेनीज के लिए, इंटर्न्स के लिए स्कीम है. Innovative approach. At least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist 50 लोकेशंस को टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा. फिजिकल टूरिज्म गाइड, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऑल दिस थिंग्स. To enhance tourist experience, every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. घूमो अपना देश आराम से. बात हुई थी अपनी Integrated किस बारे में? development of theme-based tourist circuits
the Swadesh Darshan scheme ठीक चल रहा है दोस्तों हमारे was बीच, also launched. कोई इशू तो नहीं आ रहा Under है, the vibrant आराम villages सुनते चलिए, program, बहुत सारी बातें हैं tourism करूंगा मैं। infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product. ओडीओपी के लिए यूनिटी मॉल बनाएगा राज्य में, राजधानी में या मुख्य शहरों में। And for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7. Financial sector. Last priority. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to सातवीं प्रायोरिटी, अंतिम प्रायोरिटी दोस्तों, participation in financial सप्तऋषि जिसको पीएम This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. Credit guarantee scheme for MSME. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion and foster financial stability. जो भी लोन लेगा उसका डेटाबेस तैयार करेगी सरकार एक। Will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. 5 साल से तैयार हो रही है, अब तक नहीं हुई है, कोई नई बात नहीं है। To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation as necessary and feasible will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. कल 4 पॉइंट थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, उसमें था रेगुलेटर रिव्यू करें अपनी पॉलिसीज का। Gift IFSC. The following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services and avoiding dual regulation under the SEZ Act. More focus on IFSC, जो आपके गिफ्ट सिटी टाइप के जो संस्थान है वो बनेंगे ज्यादा देश में। Instruments as valid. IFSC फोकस है सरकार का, अपने काम का बहुत नहीं है। Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. जो देश डेटा प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, हमारे डेटा रखो, हमारा सुरक्षित रहेगा डेटा। डेटा एम्बेसी। Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act and the Reserve Bank of India Act are being proposed.
capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas and certificates. Human resource for SEBI, Indian Institute of Security Market. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. ठीक है, ये सारी बातें फाइनेंशियल रेगुलेशन से हैं. Dividends for investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal. रेगुलेटरी बेसिस पे बड़े रिफॉर्म कर रही है सरकार, बहुत बड़े रिफॉर्म कर रही है रेगुलेटरी बेसिस पर. Wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. 2 लाख तक की जमा महिलाओं के नाम पर करने पर 7.5% Senior इंटरेस्ट. citizens. बधाई हो. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. सीनियर सिटीजन को टैक्स फ्री इनकम The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account. महिला सम्मान बचत पत्र बुजुर्गों के लिए, छोटी सेविंग के लिए. 15 lakh for joint account. आम आदमी को राहत दी गई है सेविंग करने की. सेविंग करो भैया. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, इन सब के लिए पैसा मिलेगा केंद्र fiscal सरकार की ओर से. deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores.
The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. 6% GDP In my अगले budget साल. speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. 5.59% GDP. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. 11 लाख करोड़ उधार लेगी मार्केट से, बाकी मिलेंगे स्मॉल सेविंग से, कुल मिला के 15 लाख करोड़ 16 लाख को घाटा Indirect होगा. taxes. अब आइए टैक्स सेकंड पार्ट पे, बजट का My सेकंड पार्ट. indirect tax proposals will aim to promote exports, टैक्स अब इनकम कहाँ boost से हो रही है वो domestic देखते हैं. manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green अभी energy हमने देखा खर्चा कहाँ and किया है. mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax. बहुत ज्यादा काम का नहीं होगा इसमें आपका. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. बहुत ज्यादा काम का नहीं है ये. There are minor changes. कस्टम किस पे कम हो गया, किस पे ज्यादा हो गया, बहुत मैटर नहीं करता मेरे लिए. And surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. बहुत काम का नहीं है ये. Mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Custom duty for lithium ion batteries and CBG machinery. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. 6 गुना अधिक मोबाइल बन रहे हैं. Domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries. मोबाइल बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों का इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए. Promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Assemble in India. बाहर से लाओ, assemble करो. Focus on that. कस्टम कम किए गए हैं. Of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys. The basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%
and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. डेटा बताया कि कितना कम हुआ, किस पे कम हो रहा है, थोड़ा नजर रख सकते हैं. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support बहुत ज़्यादा काम का नहीं है दोस्तों, कितना कस्टम हो रहा है कम. कुल मिला के फोकस एरिया है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो. मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर. बाहर से कच्चा माल लाइए, असेंबल कीजिए इंडिया में, जोड़िए इंडिया के अंदर, मोबाइल बनाइए, टीवी बनाइए, वो सारी बातें. तो बहुत ज़्यादा काम का नहीं है हमारे लिए. केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास है सरकार का. यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है दोस्तों हमारे बीच, सब कुछ ठीक है हमारे बीच. is proposed to be reduced from 7.5% to तो एक बार बहुत अच्छी बात है, पिछले 5.9% रहेगा. राजकोषीय घाटा ट्रैक पर चल रही है सरकार, 4.5 करना है 2026 तक, ट्रैक पर है. इस साल टैक्स कलेक्शन 23 लाख करोड़ का है दोस्तों, मान रही है सरकार. बात करूंगा इस बारे में आपके साथ में. ठीक है. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. श्रिम्प का चारा बनाने के लिए आवश्यक जो चीजें होती हैं वो उसका इंपोर्ट सस्ता होगा. Polishing of natural diamonds contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. लैब ग्रोन डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं. The basic customs duty on seeds used in their manufacture. लैब ग्रोन डायमंड का जो सीड्स होता है उसको मंगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है. Or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. बाहर से ज्वेलरी ना आए, गोल्ड ना आए, उसको रोकने के लिए कस्टम बढ़ाया जा रहा है. Raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials. चांदी महंगा होगा. Of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. बहुत सामान्य बात है. Rubber. The basic custom duty rate on compounded मैडम पानी पी लो थोड़ा सा आप, increased from गला सूख रहा है आपका. 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower. अच्छा एक्सपीरियंस है जो लाइव बजट करने का एक्सपीरियंस ठीक आ रहा है आप लोगों का. थोड़ी कमेंट्री मेरी कम आ रही है क्योंकि वो एक बोल बहुत बैक टू बैक रही है लगातार. वो Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. सिगरेट पर टैक्स लगेगा ज्यादा, आपदा शुल्क ज्यादा लगेगा. बहुत बढ़िया. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. टैक्स भरना आसान हो गया है. 5% of the returns were processed within 24 hours. टैक्स भरना आसान हो गया है. To further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide
enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. MSME प्रोफेशनल्स को राहत दी गई है टैक्स में. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate of 15% as is presently available to new manufacturing companies. नए कोऑपरेटिव्स पर टैक्स कम लगेगा 15% तक 2024 से पहले काम शुरू करने पर. Sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. शुगर मिल को फायदा, शुगर फार्मर्स को, शुगर केन फार्मर्स को फायदा. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काफी अच्छा काम कर रही है सरकार. अमित शाह जी मंत्री होंगे तो काम करना पड़ेगा. अमित शाह जी फोटो भी आगे देखिए अमित शाह जी का. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. Okay, startups के लिए. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. 10 साल तक रह सकता है स्टार्टअप. अब 10 साल पुराने फर्म्स को भी स्टार्टअप कहा जाएगा जो 7 साल तक था हमारे यहाँ पर. To पर. reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. स्टार्टअप की परिभाषा बदली गई है. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns and villages. Tax reduction for many purposes उसको खास बात नहीं है आपके लिए. And developing an activity or matter is आप किस में देख पा रहे हैं स्टार्टअप के लिए 1 साल का लाभ बढ़ाया गया, परिभाषा बदली गई है. Major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming.
not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Okay, listen. Personal income tax. सब ध्यान सुने. बिरला जी बस रहे हैं. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. Listen carefully. These primarily benefit our hard-working middle class. Okay, middle class के लिए है. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं. 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं. दैट्स गुड. बहुत बढ़िया निर्मला जी, ये अच्छा काम है. मिडिल क्लास को राहत, 40% का इजाफा इनकम में, 7 लाख का इजाफा. कहाँ से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया. नई पुरानी स्कीम कोई भी चूज करते हैं. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. न्यू, ओल्ड में नहीं है. ओके. Persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. नई स्कीम में second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are: listen, 0 to 3 lakh, nil; 3 to 6 lakhs, 5%; 6 to 9 lakhs, 10%; 9 to 12 lakh, 15%; 12 to 15 lakhs, 20%; and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country
is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest rate from 37% to 25% in the new tax regime. अधिक इनकम वालों को भी फायदा दिया है, सरचार्ज कम कर दिया, मिडिल इनकम को फायदा दिया है, सैलरीड पर्सन को फायदा मिला है. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, कुछ फायदा मिला. limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. ठीक है. जो पेंशनधारी हैं, नॉन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, उनके लिए रिलीफ है. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Okay. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. 35,000 करोड़ का टैक्स कम होगा सरकार कलेक्शन With में. these words, I commend the budget to this August House. खत्म बजट जी, खत्म. कुल मिला के सरकार को 35,000 करोड़ का नुकसान होगा बजट में बदलाव करने से. लेट्स मूव फर्दर दोस्तों. छोटा बजट था, बधाई निर्मला जी. ओके, बजट फाइनली खत्म हो गया दोस्तों. छोटा बजट दिया, मतलब ऑलमोस्ट 90 मिनट का भी नहीं था यार. मुझे लगा निर्मला जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे शायद इस बार. कुल मिला के दोस्तों बजट हमारे पास आ चुका है. अब मुझे 1 मिनट दीजिए, स्क्रीन को सेट करने दीजिए. 5 मिनट का एक क्विक एनालिसिस हो जाए बजट पर आपके साथ. एक क्विक एनालिसिस हो जाए बजट पर आपके साथ थोड़ा सा. ओके, 52 स्लाइड्स मेरी भरी हैं. चलिए, अच्छी बात है. लास्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा बेसिकली कि रेवेन्यू फॉरगॉन, मतलब जो सरकार ने टैक्स में कटौती की है और लोगों को राहत दी है, उससे 38,000 करोड़ का सरकार को नुकसान होगा, रेवेन्यू कम आएगा, जिसमें 38,000 करोड़ में से 37,000 करोड़ तो इनकम टैक्स से छूट मिलने के कारण हो रहा है. सरकार ने जो 7 लाख का स्लैब कर दिया और जो टैक्स कम कर दिए, और 1,000 जो कस्टम ड्यूटी सरकार ने कम की है, तो उससे लगभग सरकार को 38,000 का नुकसान होगा. लेकिन सरकार को बाकी जो टैक्स बढ़ाए सरकार ने जिन चीज़ों पर, उन सरकार को 3,000 करोड़ की प्राप्ति भी बढ़ेगी एक्स्ट्रा. तो 38,000 का नुकसान हो गया, 3,000 की प्राप्ति हो गई ज़्यादा. तो एग्जैक्ट लॉस जो है, नेट लॉस सरकार का कितना है? 35,000 करोड़ का. ये है दोस्तों लास्ट पॉइंट. बजट को अगर मैं कहूँ वन लाइन में दोस्तों, तो बजट फ्यूचरिस्टिक है, समहाउ फ्यूचरिस्टिक है. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ग्रीन फोकस है इसके अंदर. लेकिन मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेक्टर जो इसमें बाहर रह गया, वो है जॉब अपॉर्चुनिटी. आपको लगता है जॉब कहीं मिलने वाली है इसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग में सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन असेंबलिंग पे ज़्यादा जोर है सरकार का. नई यूनिट स्थापित नहीं की गई हैं, तो मुझे लगता है वहाँ का हमें स्किल को बढ़ाने का फोकस है. अब स्किल को बढ़ाने की बात तो 15 साल से मैं सुन रहा हूँ. 2009 से NSDP बना था, तब से नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब से बनाया गया था, तब से बात चल रही है स्किल को बढ़ाने की. तो आई डोंट नो कितना बढ़ेगा, इम्प्लीमेंट कितना हो पाएगा. किसानों के लिए मुझे लगता है कि नेचुरल फार्मिंग है, ऑल दिस स्टफ है. तो एक बार अगर क्विकली मैं 7 फटाफट आ जाऊँ मैं आपके साथ, 7 प्रायोरिटीज़ पर आ जाऊँ जल्दी से आपके साथ. कैसा लगा सेशन दोस्तों? पहले बताइए मुझे आप लोग. सेशन मजा आया कि नहीं आया? बजट का लाइव नोट्स बना रहे थे, मैं तो बना रहा था, आप लोग आई डोंट मानो. वैसे सुनता मैंने कहा आपका संग सुन लिया जाए तो अच्छा रहेगा, मेरे को थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि यार आपके साथ थोड़ा सा कंटिन्यूटी बन जाती है, वरना कोई बैल बजाता है, कोई बीच में आ जाता है.
तो क्लास चल रही है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता फिर मुझे यहाँ पर। तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात रही, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आपके साथ दोबारा यहाँ पर। तो सरकार की 7 प्रायोरिटीज दोस्तों हम देखें यहाँ पर, सरकार ने जो 7 प्रायोरिटी, 7 सप्तऋषि सरकार ने इसको बोला यहाँ पर, सप्तऋषि या 7 प्राथमिकताएं फॉर अमृतकाल। ये तो जहाँ बात की इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की, उन्होंने बात की किस प्रकार से यहाँ पर हमारे यहाँ पर फोकस किया जाए ग्रीन ग्रोथ के ऊपर, फोकस किया जाएगा यूथ के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर फोकस करने की बात सरकार ने कही यहाँ पर। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए वंचितों को वरीयता इसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पर। डिजिटल इंफ्रा, एग्रीकल्चर के बहुत काम किया दोस्तों। ओपन सोर्स की बात कर रही है सरकार, मुझे लगता है काम का है, क्योंकि कल का लेक्चर हमने बोला था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है। 4 पिलर याद है दोस्तों, अभी शायद मेरे पास होंगे भी वो चारों पिलर, अगर मैं देख पाऊँ आपके लिए तो चारों पिलर आप याद करें दोस्तों। कल हम बात कर रहे थे आपके साथ, कल हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर की बात ही कर रहा था मैं, किस प्रकार सरकार ने फोकस किया है। ये खुला भी है, देखिए अभी तक खुला भी है। तो सरकार ने कहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, देखिए चारों चीज़ें ना जो कल बताया था सरकार का फोकस रहेगा बजट में दिखाई दे रही हैं। अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ रिफॉर्म फॉर न्यू इंडिया, नए इंडिया का फ्रेमवर्क वो आजकल बजट में दिखाई दे रहा है। ये 4 चीज़ें फोकस हैं। क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स क्या है, तो पहला जो सप्तऋषि जो बताया सरकार ने वो यही है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या है, रेगुलेटर को बदलाव करिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव फोकस कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को शामिल कीजिए, और क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इंफ्रा तैयार कीजिए। और मुझे लगता है पूरा बजट जो है ना इसी पर बेस्ड है इस बार का। ये चारों पॉइंट जो है दोस्तों, आप देखेंगे पब्लिक गुड्स की बात करना यहां पर, माफ कीजिएगा, एनहेंस अपॉर्चुनिटीज की बात करें आपके साथ हम लोग यहां पर, ईज ऑफ लिविंग की बात करें, सरकार वही काम कर रही है दोस्तों यहाँ पर। उड़ान स्कीम, एनआईपी स्कीम, एनआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं दोबारा हूँ बजट पर लौट के दोस्तों, बजट पर लौट के दोबारा हूँ मैं। तो सरकार ने जो 7 प्रायोरिटी रखी थी यहाँ पर, पहले प्रायोरिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दोस्तों, मिलेट्स को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी यहाँ पर थी ऑफकोर्स रीचिंग द लास्ट माइल, हमने देखा इसको कैसे सरकार कर रही है, एकलव्य स्कूल बना रही है, पीवीटीजी स्कीम लॉन्च की हम लोगों ने दोस्तों की पॉइंट्स में। थर्ड इंफ्रा फोकस कर रही है सरकार, इंफ्रा पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा ऑफकोर्स जो न्यू टेक्नोलॉजी उस पर बात कर रही है सरकार, डेटा गवर्नेंस की बात कर रही है, रुपए फाइनेंस का बात हो रही है यहाँ पर, 5G की बात हो रही है, किस प्रकार ग्रीन ग्रोथ की बात हो रही है। तो ये 4-5-7 चीज़ें हैं दोस्तों, सप्तऋषि मैं मानता हूँ इस पर सरकार का फोकस है। और ये देखिए यूपीएससी ना सीधे पूछता है, अगले बार सीधे पूछेगा अमृतकाल की प्राथमिकताओं पे चर्चा करें, अमृतकाल की प्रायोरिटीज क्या, इस पे चर्चा करें। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके लिए तैयार वहां हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटर को लेकर बहुत कुछ है, और यूपीएससी का अगर कहूं तो इसके बजट में आपके लिए क्या क्या है दोस्तों, मैं आप कहें तो सेव करके मैं सेंड कर दूंगा, हालांकि मतलब नहीं है मेरी हैंडराइटिंग में, मुझे समझ नहीं आएगा तो आपको कहाँ से आएगा समझ में सब कुछ, लेकिन फिर भी एक ऑर्डर वाइज बजट पूरा हमने सुना पढ़ा। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ दोस्तों आपके लिए फॉर यूपीएससी पर्पज़ के लिए, बड़ी बात होती है निर्मला जी को सुनते हुए की पॉइंट नोट करना, डेटा को सुनना बड़ा जरूरी है, डेटा मिस ना हो जाए कुछ तो बड़ा काम का होता है। तो बड़ा जल्दबाजी नोट बनाए जाते हैं, अब देख ही रहे थे, लेकिन अच्छी बात होती है कि एटलीस्ट फर्स्ट हैंड नोट्स होते हैं। अब ये क्या हमने लिख लिया तो मुझे साल भर याद रहेगा अपना कि यार हाँ ऐसा कुछ हुआ था, डेटा याद रहेगा तो हमेशा काम आएगा दोस्तों। ठीक है, तो कंक्लूड करूँ यूपीएससी के दोस्तों, तो काम की बात है, याद रखिएगा न्यू इंडिया या जो अमृतकाल है हमारा, इसमें भारत की प्राथमिकताएं, जी हाँ, तो 7 प्राथमिकताएं, इनको फोकस करना है आपको इस बजट से। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं दोस्तों। जैसे पीएम साहब ने लोगों के लिए कहा था पंच प्रण लाल किले से 15 अगस्त को, तो वी आर सिटीजन, हम क्या करने वाले हैं, पंच प्रण लेने वाले हैं अमृतकाल के लिए। पंच प्रण, 5 कर्तव्य, 5 फंडामेंटल ड्यूटीज मेरी। यहां पर सरकार क्या करने वाली है, सरकार की 7 प्राथमिकताएं हैं, गवर्नेंस भी शामिल है उसके अंदर, इंफ्रा भी शामिल है, इंफ्रा भी बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। तो ऐसी हर किसी की प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, और यहाँ सरकार ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है। मुझे लगता है ये काम का है दोस्तों। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि रीचिंग द लास्ट माइल के अंदर जो काम है, खासकर जो सेकंड प्रायोरिटी, इसमें से जो सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको बहुत काम पड़ने वाला है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो समझ है हमारी, जो गांधीवादी सोच है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, उसको कैसे कर रहे हैं पीवीटीजीज के लिए, एसटीज के लिए, फार्मर्स के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, लद्दाख के लिए, इन पे क्या फोकस कर रहे हैं मुझे लगता है, तो वो आपके काम का हो सकता है। यहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी या बेनिफिट ऑफ लास्ट माइल, इसकी बात करना, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का सिद्धांत, जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा मुझे लगता है जो इस बजट के अंदर कीवर्ड्स हैं, मिडिल क्लास को, इसमें एक बात नोटिस करिए आपने, सरकार ने घाटा बोला है 5.9% ऑफ जीडीपी। इस साल फिस्कल डेफिसिट रहेगा इतना यहाँ पर सरकार का। सरकार मान रही है कि लास्ट टाइम 6.4% रहा पिछले साल, यानी जो चल रहा है ईयर, अगले साल इतना रहेगा। और 2025-26 तक सरकार ने जो घोषणा की थी कि 4.5% तक हम लेकर आ जाएंगे, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। जी हाँ, तो सरकार, निर्मला जी ने फिर ये कन्वे किया कि जनाब हम लोग टारगेट पर हैं,
मिशन मोड में काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे निर्मला जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो 5.9 का जीडीपी परसेंट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, बड़ी बात ये मुझे लग रही है कि इस बार जो मार्केट बोरोइंग है, जो उधारियां हैं दोस्तों, वो 11 लाख करोड़ की है सरकार की मार्केट बोरोइंग। बाकी सरकार कहां से लेकर आ रही है, स्मॉल सेविंग से। और बड़ा ही अच्छा काम किया, स्मॉल सेविंग में महिलाओं के लिए स्कीम ला दी सरकार ने, सीनियर सिटीजन को फायदा बढ़ा दिया। सरकार क्या कर रही है, हमें बाजार में जाकर उधार नहीं लेना, हमें मार्केट से बोरो नहीं करना। मार्केट अनसर्टन है इस समय, मार्केट रिसेशन से गुजर रहा है, आपको शायद पैसा ना मिले, मार्केट अनसर्टन है, तो बेहतर है मार्केट से कम उधारियां ली जाएं, हम अपनी स्मॉल सेविंग से, लोगों की बचत से। अब एक तरफ निर्मला जी कह रही हैं जनाब कि 7 लाख का टैक्स स्लैब कर दिया आपके लिए, यानी आपको टैक्स में बचत मिलेगी। और न्यू रिजीम क्या कर दिया उन्होंने, न्यू रिजीम को कर दिया डिफॉल्ट रिजीम, यानी कुल मिलाकर कहा जाए वो चाहती हैं अब सेविंग की तरफ जा जाएं आप। अब देखिए सेविंग की तरफ जाना चाहती है, ले जाना, इसलिए स्मॉल सेविंग को बढ़ा दिया इन्होंने वहां पर, स्मॉल सेविंग की स्कीम। अभी 1 महीने पहले ही स्मॉल सेविंग के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे, आपको याद हो तो स्मॉल सेविंग के इंटरेस्ट रेट 1%, 1.5% तक बढ़ाए गए थे। तो स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, लोगों के लिए नई स्मॉल सेविंग की स्कीम महिला सम्मान बचत पत्र योजना या सरकार ने लॉन्च की है, सीनियर सिटीजन के लॉन्च की है। अल्टीमेटली आप 2 साल के लिए, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, 2 साल के लिए, नोटिस कीजिएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है सरकार को, लॉन्ग टर्म नहीं करनी। मार्केट बोरोइंग लॉन्ग टर्म करनी होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है, निकलना है, चुनाव के बाद देखेंगे। 2 साल का समय मांगा है यहाँ पर, तो 2 साल के लिए बचत योजना है सरकार की, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी सरकार क्या कर रही है, मार्केट से उधार नहीं लेकर लोगों से लेकर। मैं इसको लिंक कर रहा हूं दोस्तों, बड़ा प्यारा लिंक है, अगर आप समझ पाएं तो आप बजट को समझ चुके हैं, इकोनॉमी की ब्लड सेल बनना चालू हो चुकी हैं। समझिएगा दोस्तों, सरकार क्या कह रही है, मार्केट से, बाजार से उधार नहीं लेंगे या कम लेंगे, बाजार से उधार हम कम लेंगे। ठीक है, हम उधार कहां से लेंगे, घाटा तो है, उधार तो लेना है, हम लेंगे स्मॉल सेविंग वालों से उधार। अब स्मॉल सेविंग के लिए हमने क्या किया, पिछले महीने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, ब्याज दरें बढ़ाई थी, महिला सम्मान बचत पत्र लेकर आ गए, हमने एक सेविंग सर्टिफिकेट जारी कर दिया नए प्रकार का कि लोग स्मॉल सेविंग करें। और फिर भी ना करो तुम तो एक काम करो, हमने क्या किया है, टैक्स सिस्टम में न्यू रिजीम लागू कर दिया। उसका सीधा मतलब है पैसे बचाओ और जमा करो। जमा करो कहां पर, बैंक के अंदर, स्मॉल सेविंग के अंदर, जिससे आपको टैक्स में छूट मिलेगी। अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए तो बचत में जमा करो। और एक बात, इसको लिंक करें 2 महीने पुरानी खबर से, कल भी आया था सर्वे में दोस्तों कि बैंक लोन तो बांट रहे हैं, लोन क्रेडिट तो बढ़ रहा है, बैंकों की सेविंग नहीं बढ़ रही है, बैंकों में लोग जमा नहीं कर रहे हैं पैसा। ये बड़ा संकट था, क्योंकि ये बार बार आया आर्टिकल्स के अंदर कि बैंक क्रेडिट तो बहुत बढ़ गया है, बैंक लोन खूब बांट रहे हैं, लोग लेने आ रहे हैं लोन, लेकिन बैंकों का पैसा खत्म हो रहा है। तो सरकार ने कहा भैया आशीर्वाद रुको, खर्च मत करो, ज़्यादा सेविंग में फोकस करो, सेविंग करो, थोड़ा सा बचत करो, थोड़ी सी बचत करो। तो क्या करो, स्मॉल सेविंग वो हम लेंगे उधार, बैंक में जाके जमा करो, थोड़े मिडिल इनकम हो तो। और जो उच्च वर्ग है, जो ऊपरी वर्ग है, उससे क्या कहा, टैक्स की चिंता मत करो बेटा, खर्च करो, क्योंकि डिमांड तो आप ही पैदा करोगे देश की। बड़ा ही संतुलित बजट दोस्तों, सभी के लिए कुछ ना कुछ। अगर यूपीएससी का फोकस समझ में आया हो आपको यहाँ पर, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको एग्जैक्टली? इसके अलावा डेटा एम्बेसी बना रहे हैं, डेटा हमारे यहाँ स्टोर करो। दुनिया में भारत क्या कर रहा है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, और डेटा एम्बेसी वहां लिखेंगे ग्लोबल साउथ में, क्योंकि करीब देश हैं, बेचारे पिछड़े हुए देश हैं, उनके पास डेटा सेंटर बनाने की क्षमता नहीं है, सर्वर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। आइए हमारे यहाँ आइए, वेलकम इन इंडिया, बनाइए डेटा सर्वर, IFSC गिफ्ट सिटी बनाइए, जाकर टैक्स फ्री है, बनाइए आराम से। अभी कुछ दिनों पहले सैटेलाइट हब लिंक हमने अपर लिंक का परमिशन दी है, सैटेलाइट लॉन्च कीजिए हमारे यहाँ से डेटा अपलिंक कीजिए, कोई समस्या नहीं है। यानी सरकार, भारत सरकार भारत को एक ग्लोबल साउथ के लिए सर्विस प्रोवाइडर बनाना चाहती है। एक विजन है जो दिख रहा है पिछले कुछ स्कीम्स, और G20 का प्लेटफॉर्म इसमें मदद करेगा सरकार की। जी हाँ दोस्तों, अनपढ़ बात है यहाँ पर। थोड़ा सा हिंदी में लिखिए बेटा, हिंदी है मार्केट बोरोइंग, बेटा अब हिंदी ही बोल रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, मैं हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। बाजार उधारियाँ, छोटी बचत योजनाएं, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ठीक है, वो सारी हिंदी में ही है दोस्तों। ओल्ड और न्यू में अंतर क्या है बेटा, ओल्ड और न्यू में ना रिजीम का एक तो अंतर है। ओल्ड और न्यू में क्या है, पुरानी स्कीम चलती थी कि भैया टैक्स रिबेट नहीं होता था उसमें, मतलब आप टैक्स भर दीजिए, ठीक है, और टैक्स स्लैब भी कम होते थे, 5%, 10%, 20% के स्लैब होते थे सीधे सीधे उसके अंदर। अब स्लैब भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले वो TDS का फ़ायदा मिलता था आपको, या मैं कहना चाहिए आपको यहाँ पर जो फॉर्म 80C का फ़ायदा मिलता था, अब नहीं मिलता उसमें नई रिजीम में। तो कुछ बदलाव हुए थे 3-4 साल पहले, ये उसको तब से ओल्ड और न्यू बढ़ गया। अब तक क्या होता था, अगर मैं इनकम टैक्स भरने गया और मैंने कुछ लिखा नहीं ओल्ड और न्यू, तो
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता था मैं ओल्ड से भर रहा हूँ। अगर मैं न्यू रिजीम में जाना चाहता था तो भरना पड़ता था न्यू रिजीम के तहत या नई व्यवस्था के तहत। अब क्या होगा, वो न्यू रिजीम ही डिफॉल्ट हो गया, यानी मैं इनकम टैक्स भरूंगा तो मानेगी सरकार कि आप न्यू रिजीम के तहत भरना चाहते हैं। अगर आपको ओल्ड के टैक्स भरना है तो आपको लिखना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत। तो अंतर ये थोड़ा स्विच हो गया, बहुत माइनस अंतर है, वो मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि टैक्स भरने जाते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जानते हैं क्या टैक्स भरना है और किससे उनको फायदा होगा। तो थोड़ा सा ये वेल अवेयरनेस होते हैं लोगों में स्तर। और मुझे लगता है कि आप रीचिंग द आउट की बात कर सकते हैं आप यहाँ पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है सिविल सेवा के लिए सरकार जो गवर्नेंस रिफॉर्म कर रही है, जी हाँ गवर्नेंस रिफॉर्म, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म आरबीआई सेबी जो वहाँ रिफॉर्म हो रहे हैं, जो फार रीचिंग रिफॉर्म होंगे देश के अंदर रेगुलेटर के स्तर पर, यूपीएससी का गवर्नेंस का जो पेपर 2 का पार्ट है गवर्नेंस, वहाँ पर लगातार बात करता है वो रेगुलेटर्स के ऊपर। तो मुझे लगता है वहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है दोस्तों। बाकी इस पर डिटेल एनालिसिस लेकर आऊँगा मैं कब आपके लिए, रात को 8 बजे। अपडेट रहिएगा इसी जगह पर दोस्तों मेरे साथ, आप लोग यहीं मिलूंगा रात को 8 बजे। डिटेल एनालिसिस करूँगा एक एक स्कीम का, फंड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इन बातों को जोड़ूंगा जो पढ़ाया मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको। और हो सकता है ये नोट्स भी खोलूँ दोबारा आपके लिए मैं यहाँ पर। रात को 8 बजे फिर मिलेंगे आपके साथ डिटेल एनालिसिस में और बजट में, जहाँ बजट का होगा डीप एनालिसिस आपके साथ। बाकी दिन भर में कुछ वीडियोस आते रहेंगे जहाँ जो सरकार ने नई स्कीमें लॉन्च की है, पीएम परिणाम स्कीम लॉन्च की है, मिस्टी स्कीम मैंग्रोव के लिए मिस्टी स्कीम लॉन्च की हम लोगों ने। थोड़ा सा स्पेलिंग हो सकता है एक आध जगह गलत देखी हो मैंने, रनिंग नोट्स से एक आध जगह गलत हो सकता है, मान सकता हूँ मैं, क्योंकि रनिंग नोट्स में आप सुन रहे होते हैं और कई लिख भी रहे होते हैं पैरेलल में, तो एक आध स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसको बाद में सही कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो शाम को 8 बजे ज़रूर रहेंगे आप मेरे साथ यहाँ पर। उम्मीद करूंगा दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। मज़ा आया तो बताइएगा मुझे आप लोग। लगभग हम 100 ऑलमोस्ट 100 मिनट बैठे, 100 मिनट बैठा हूँ मैं आपके साथ यहाँ पर। तो अगर अच्छा लगा हो, रनिंग नोट्स मज़े आए हों तो बनाइएगा, क्योंकि आप के अंदर इकोनॉमिक ब्लड सेल बनाना मेरा काम है दोस्तों। जी हाँ, एग्जाम में इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, हमेशा बोलता हूँ छूटते भी नहीं हैं। तो प्लीज़ जो जुड़ रहे हो जुड़े जाइए दोस्तों। शाम को मिलेंगे आपसे 8 बजे इस चैनल पे, और रात को 10 बजे मिलेंगे अपने लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी वाले चैनल पे, जब हम बात करेंगे एडिटोरियल 360 के दोस्तों। तो अभी दीजिए आज्ञा, याद रखिएगा शाम 8 बजे इसी जगह इसी चैनल पे मिलेंगे आपके साथ हम लोग डीप बजट एनालिसिस या डिटेल बजट एनालिसिस में। तब तक ले दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया।